chapter 8 subject. Okay, it's basically elective subject, and it is one of the important subject in every aspect, because यहाँ पे हमारे पास डेटा साइंस आ जाता है. जब भी हमारे सामने डेटा साइंस आ जाता है, इसका मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके, सो क्या क्या सब्जेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं. आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग अबाउट द मॉड्यूल नेम. द मॉड्यूल नेम इज itself the first module, that is introduction modules. Module is number 1, that is the introduction. Introduction to data science. I think काफी interesting topic है. Data science के बारे में introduction क्या होगा. Okay, before going to start, so my name is Professor Amit Ailani, and I'm the professor in the VIT college, and I'm taking the subject that is consecutive 3 times. Okay, so first module name is the introduction to data science. Another modules, that is data exploration. Another is the module number 3, which is methodology. And the data visualization. Okay, next the module name is the module number 4, which is anomaly detection. Okay, I will tell you about the detailed part of this module. Anomaly detection. Next, the module is module number 5, which is time series forecasting. And lastly, the main topic is, that is application. Module number 6 is the applications of data science. All right. So mostly अगर अब मैं data science की मैं बात करूँ तो data science subjects I think अब मैं थोड़ा सब पढ़ा होगा. We have studied in the machine learning, deep learning. But ये subject क्या है? ये applied data science. Basically हम data science को use करते हैं. इस सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन से देख सकते हो आप. यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी. अगर मैं मॉड्यूल नंबर 1 की मैं बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 1 में मुझे मिलेगा इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे वी डिस्कस अबाउट दी हम डेटा साइंस की क्यों नीड पड़ती, व्हाई वी रिक्वायर द डेटा साइंस. दूसरा, कहाँ पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्या क्या उसके कंस्ट्रेंट्स है, वॉल्यूम क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वेयर वी कैन यूज इट, व्हाट इज डेटा, हाउ टू प्रिपेयर द डेटा और एक्चुअली डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है, डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है. तो ये कंप्लीटली ऑल अबाउट दी मॉड्यूल नंबर 1. आई थिंक काफी जेनरिक चीज आती है. डेटा साइंस के बारे में आपने बहुत चीज सुनी होगी, उसके बारे में डिफाइन करता है. अनदर थिंग इज डेटा एक्सप्लोरेशन. अभी डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, दैट इज आपको डेटा को एक्सप्लोर करना है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेटा की बात करूँ, एक्सप्लोर करने की बात करूँ, तो हमारे पास निकालने का तरीका होता है मीन, मोड, मीडियन, राइट, या स्टैंडर्ड डेविएशंस, या बोल सकते हैं वेरिएंस क्या होता है. तो जितने भी डेटा के अंदर जो हम लोग न्यूमेरिकली, स्टैटिस्टिकली हम लोग देख सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द डेटा एक्सप्लोरेशन. थर्ड मॉड्यूल इज मेथोडोलॉजी एंड द डेटा विजुअलाइजेशन. अब इसके अंदर हम क्या क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करूँ तो मैं क्या अप्लाई करके देखूंगा, क्या क्या मेथोडोलॉजी लगा के देखूंगा. एंड लास्टली, दैट इज विजुअलाइजेशन. द डेटा विजुअलाइजेशन, हम किस फॉर्म में डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. कैन वी कैन सी, अगर मैं डेटा को इस फॉर्मेट पे देखना चाहता हूँ या वैसा देखना चाहता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि डेटा को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, राइट. I hope you understand the topic. Now, lastly, the next module says anomaly detection. What is anomaly? Anomaly का मतलब होता है, जो भी हम डेटा की बात करते हैं anomaly की, anomaly डेटा क्या करता है, जो outliers होते हैं, जो एक एक्ससीड हो जाता है, लिंक से बाहर हो जाता है, we can call it as anomaly detection. Okay. I hope everyone see my screen now. Someone please acknowledge. Yes, sir. Thank you so much. So now the next is data anomaly detection. The anomaly is means that अगर मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो मुझे
एक ऐसा चीज है, डेटा पता करना है जो एकदम लिंक से हटके। एनोमॉली का मतलब होता है जो मुझे अनस्ट्रक्चर्ड वे में एक अलग ही वैल्यू देके जा रहा है, राइट? उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तीसरा आता है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। हम किसी न किसी को फोरकास्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसके पीछे पुराना डेटा मुझे चाहिए होता है। एंड लास्टली द एप्लीकेशन ऑफ द डेटा साइंस। तो ये पूरे के पूरे 6 मॉड्यूल्स हैं जो बेसिकली फोकस करता है अप्लाइड डेटा साइंस को। डेटा साइंस सब्जेक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीजन वाई, क्योंकि हमने सुना होगा डेटा साइंस मशीन लर्निंग काफी चीजें पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे अल्गोरिथम से ज्यादा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस होगा, डेटा पे ज्यादा फोकस होगा। हम कैसे डेटा पे हम अप्लाइड कर सकते हैं अल्गोरिथम्स। तो आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द डेटा। डेटा को हम यूज करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे, डेटा को स्टैटिस्टिक्स करेंगे, डेटा को विजुलाइज करेंगे। एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली डेटा पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। चलो, तो ये आपके मॉड्यूल्स हैं। व्हाट इज द टाइम कंस्ट्रेंट? टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव 30 आवर्स ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट आई प्रिपेयर, आई विल प्रोवाइड टू यू दैट इज लेक्चर नोट। जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ वो आपको एक लेक्चर नोट एवरी पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड ऑफ द डे में, विच विल बी अवेलेबल इन द लाइक आपके एक स्टडी मटेरियल ऐप में, और आई विल प्रोवाइड यू इन द ड्राइव लिंक. So in the drive link and the lecture, you will see what the lectures are there. Another thing that is I have prepared some question bank. This is the question bank, which is the sample question bank, which what kind of question is expected. For example, last time paper कैसा आया था, उसके पहले कैसे पूछा गया था, because this subject is introduced last year. ओके, सो इसके पहले सब्जेक्ट का नाम हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में होगा, बट अप्लाइड डेटा साइंस को लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो दिस कंसेक्यूटिवली 2 times इज अप्लाइड डेटा साइंस। ओके, इसके पहले डेटा साइंस सब्जेक्ट था, बट वो आईटी ब्रांच में था, बट यहाँ पे इन्होंने पहली बार कंप्यूटर में लेके आया लास्ट में। सो दिस इज आई विल प्रोवाइड यू ऑल। ओके, चलो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओके, वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकली थोड़े से एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो। स्पेसिफिक इन मॉड्यूल नंबर 2 में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में भी टाइम सीरीज थोड़ा सा पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 मॉड्यूल में से थोड़े से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है जो कि आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, राइट? और नॉट ऑल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, दिस इज द पर्टिकुलर जो मैंने आपको मेंशन किया है वहीं से आपके एक्सपेक्टेड है, बाकी सबसे नहीं, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस साइड आल्सो, ओके, बट मेजॉरिटी आर 50-60% will 50% will be the theoretical part, 50% will be the numerical part. तो आपको सिलेबस भी आपको वैसा ही सॉर्ट ऑफ दिखेगा। चलो शुरू करते हैं आगे। ओके, सो ये तो हुआ सब्जेक्ट की बातें। अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा के बारे में। अगर मैं डेटा की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा इज नाउ डेज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीजन, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक डेटा सेट आ गया है या डेटा है, आपको पता है मार्केट में डेटा बिकता है, आपको पता होगा ये बात। आपको अननेसेसरी लोगों के कॉल आ जाते हैं, अगर आपको पता भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी देख रहे हो, रेंट देख रहे हो, यू डोंट नो, आप कुछ नहीं देख रहे हो, फिर भी आपके पास आ जाता है। कुछ कंपनी आपको कॉल करेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए करेगी, आपके फैमिली मेंबर को आते हैं कॉल्स, आपको कुछ रैंडमली कॉल लग जाते हैं। ये होता कैसे? व्हाट इट्स हैपन एक्चुअली, हमारा डेटा हम जहां भी देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, कहीं पे भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम डेटा को शेयर करते हैं, हमारा डेटा ऑलवेज सेल होता है। इट इज ट्रू। अब आप बोलोगे कैसे सर? सपोज करो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो डेटा होता है वो काफी कंपनी के लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ डेटा के अंदर क्या हो सकता है, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब हमारी वैल्यूज होती है। क्या क्या एट्रीब्यूट बोल सकते हो? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास नेम होगा, हमारा ईमेल एड्रेस होता है, राइट, हमारा लोकेशन होता है, हमारा प्रोफाइल के अंदर हमारा हो सकता है जॉब कैटेगरी। अगर आप जॉब करें तो जॉब का कैटेगरी आ सकता है। अब जॉब में भी बहुत सारी कैटेगरी, अगर आपका पैकेज हाई है, मीडियम है या लो पैकेज है, राइट। दूसरा, आपकी सिटी क्या है, व्हाट यू आर इन्वेस्टेड, आपने क्या इन्वेस्ट किया, ये बहुत सारी डिटेल्स आपकी प्रोफाइल क्रिएट करता है। अब ये प्रोफाइल आपके किसी भी जगह पे हो सकता है, लाइक इट कुड बी अवेलेबल इन द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, या किसी एप्लीकेशन में, किसी वेबसाइट में। ये सारा डिटेल कोई ना कोई आपसे जरूर मांगता रहता है, राइट। अब इस डेटा का हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सर कौन सा डेटा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, राइट। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे भी आपका डेटा जाता है। कुछ ऑफलाइन आप खरीदते हो तो भी आपका डेटा जाता है। कुछ भी आप परचेस करते हो या कोई भी चीजें परचेस करते हो तो आपका हर जगह डेटा जा रहा है। तो उसका मतलब एवरीवेयर डेटा इज अवेलेबल।
तो डेटा को गैदर किया जाता है, हर अलग अलग फील्ड में डेटा गैदर किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा को क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं। डेटा को एनालिसिस करने के बाद आई विल टेक अ डिसीजन। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो, ओके, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन इन द क्लास। Let's take an example. That is Pranav. Okay, Pranav is there. Suppose Pranav is one of the student. Okay, Pranav is very active in Amazon. And Pranav, what Pranav do? वो क्या करता है, Pranav is waiting for the sale. Pranav क्या करता है, सेल का वेट करता है। उसको पता है न्यू ईयर पे, इन ऑन न्यू ईयर पे आपको एक सेल आती है, राइट? न्यू ईयर पे ही सेल आती है, राइट? Pranav ओनली परचेज ऑन द न्यू ईयर। प्रणव न्यू ईयर के अलावा कभी भी परचेस नहीं करता है, कहीं पे भी परचेस नहीं करता है। रीजन वाई, क्योंकि उसको पता है वहां पे ऑफर्स होते हैं, जो भी परचेस करेगा वो तभी करता है। बट अब देखो, ध्यान से देखो, अभी क्या होता है, मैंने एक अमेजोन ने, सपोज करो अमेजोन ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला। उसने देखा कि यार सबसे ज्यादा सेल कहाँ होती है। उसने देखा कि यार जो सेल हो ना दिवाली के टाइम पे ज्यादा होती है, फिर हो सकता है न्यू ईयर पे और ज्यादा होती है, राइट? हो सकता है उसके बाद कुछ होली वगैरह आता है तब होती है। तो उसके पास स्टैटिस्टिक्स है, राइट? अब दिखता है, ध्यान से देखो कि अगर मुझे पता है न्यू ईयर पे सेल हो रही है, समझो ध्यान से, वो क्या करेगा, डेटा गैदर करेगा, किस किस कस्टमर ने, किसने होली के टाइम पे सेल लिया था या होली के टाइम पे परचेस किया। अब सॉरी, दिवाली के टाइम, अब जो भी दिवाली के टाइम पे परचेस किया है, तो उस टाइम पे वो उसको उठा के उसी समय क्या कर देगा, उसमें से उसका डेटा को उठाएगा और उस डेटा के वैल्यू को ढूंढेगा, दिवाली में कितने लोगों ने परचेस किया है अब, या न्यू ईयर में किसने परचेस किया, उन लोगों को टारगेट करेगा जो सिर्फ साल में एक बार ही खरीद रहे। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर मैं तीनों जगह प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो क्या मेरे काम का है क्या वो पर्सन? नहीं। अमेजोन ओनली फोकस ऑन दो पर्सन जो स्पेसिफिकली काफी कम टाइम में एक्टिव रहते हैं या काफी कम टाइम में अमेजोन में प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब उन्हीं को सेल आएगा, उन्हीं को मेल्स आते हैं, उन्हीं को एसएमएस आते हैं, उन्हीं को ही प्रमोशन किया जाता है। ऐसा होता है, यस सुनो, इज इट राइट? अगर मैं रेगुलर कस्टमर हूं तो मुझे भाव तक नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यू आर एक्टिव मेंबर। बट जो पर्सन जो जो दिवाली के टाइम पे कुछ लोग नहीं है यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर पीपल आर नॉट देयर, वो न्यू ईयर में शॉपिंग करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है कि उनको दिवाली के टाइम पे एन नंबर ऑफ मेल्स भेजो, ऑफर्स भेजो, कि क्या पता शायद उनका मन बदल जाए, राइट? उनको मेल भेजने में क्या लगेगा? और कुछ लोग होली में नहीं खरीदते, तो उनको होली के लिए भी टारगेट करो कि ये लोग होली में क्यों नहीं आ रहे, राइट? तो उनको मेल्स प्रमोशन ज्यादा आते हैं जो लोग परचेस नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है, आई वाज रिमेम्बर दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो आपको पता होगा बहुत जगह पे ऐसा होता है। अपने ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ग्रोफर एक आया था, एक जमाने में ग्रोफर आता था यार, किसी को याद है ग्रोफर? ग्रोफर इज वन ऑफ द ग्रोसरी ऐप, इफ यू रिमेम्बर दैट समवन फ्यू इयर्स अगो। आई थिंक वो मर्ज होके कन्वर्ट होके आई थिंक चेंज हो गया, आई डोंट नो द नेम। तो देयर इज सम एप्लीकेशन जहां पे आप प्रोडक्ट बाय करते हो या ग्रोसरी लेते हो, या हो सकता है आपने एक दो बार यूज किया होगा बिकॉज ऑफ द रेफरल प्रोडक्ट की वजह से, आपको किसी ने बोला होगा कि रेफरल आया है ले लो। जैसे एज अ स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप करते हो, यस और नो, कि यार कुछ सेल कुछ मुझे ऑफर दे रहा है, रेफर कर रहा है, तो मैं इसमें बेनिफिट होता है, विल डू इट एज अ स्टूडेंट, विल डू इट, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, आफ्टर सम टाइम मैंने उसको यूज किया, जो भी प्रमोशनल कोड मिला, 50% ऑफ मिला, वॉट एवर इट इज, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं उसको भूल गया क्योंकि मैंने उसको ऑफर लिया, खेल खत्म। पर आपको याद रखना, कभी भी देखना, जो आपने ऐप अनइंस्टॉल करके रखा उसका एक मैसेज आएगा, यू हैव क्रेडिटेड ₹50 इन योर अकाउंट, यू कैन यूज इन विद इन 10 days। इज इट यस और नो? कितने लोगों के साथ ऐसा हो? कॉमन राइट नाउ चैट बॉक्स। ऐसा होता है कभी? एनी प्लेटफॉर्म, एनी एप्लीकेशन जो आप यूज करके बंद कर देते हो, वहीं पे आपको मैसेजेस आएंगे, वी प्रोवाइड यू 10% ऑफ ओनली फॉर यू। यस, इट्स हैपन, कम ऑन। यस सर। यस, व्हाई इट इज हैपन, बिकॉज आपको पता है जो रेगुलरली कस्टमर जो यूज कर रहा है वो तो एक्टिव है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑफर, सेल या क्रेडिट्स या आपको एड ऑन प्रमोशंस कोड, वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं। दे टारगेट अबाउट इट। द रीजन वाई जो डेटा एनालिटिक्स आप करते हो या डेटा को एनालिसिस करते हो, उसके बाद जो डेटा डिसीजन लिया जाता है, दैट इज योर डेटा साइंस, राइट? अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो एक डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है? डेटा को एनालिसिस करेगा। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकता है, वो VI टूल यूज कर सकता है, एक्सेल यूज कर सकता है। लेकिन एक डेटा साइंस इंजीनियर का काम क्या होता है? दे प्रोवाइड यू द राइट डिसीजन, राइट? वो डिसीजन लेने में हेल्प कर।
सो यहीं पे गेम आता है, हम उनको टारगेट करते हैं जो बेसिकली लो एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, उनको ही टारगेट किया जाए. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, write on the definition. Let's start the first definition, that is data science. Come on, write this. Okay, the data science is about data gathering, analysis, and decision making. Next point, data science is about finding patterns in data through analysis and the future prediction. It is a deep study of massive amount of data which involve extracting meaningful insight from raw structured and unstructured data that is processed using the scientific method, technology, and the algorithms. Okay, note down, I will discuss. All right. So now let's discuss about this topic. क्या बोलना चाह रहा है? डेटा साइंस एक ऐसा चीज होता है जो हमेशा डेटा गैदरिंग, उस पर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में काम करता है. इट इज ऑल अबाउट दी फाइंडिंग दी पैटर्न इन द डेटा. आपने देखा होगा डेटा का पैटर्न, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैं हमेशा दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे हमेशा लेता हूँ, तो दैट इज माय पैटर्न. हमेशा देखा होगा एक यूजर का एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है. यूजर सबसे क्या बाय करता है, यूजर ग्रोसरी में क्या बाय करता है, या ये प्रोडक्ट क्या बाय करता है, किस में हम उनको ऑफर देना चाहिए, किस में ऑफर नहीं देना चाहिए. नॉर्मली पैटर्न पता जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारे, कभी आपने कभी परचेस करते हो ग्रोसरी, कभी जाते हो फैमिली मेंबर के साथ, तो आपको पता होता है कि किस पर्टिकुलर में ऑफर रहता है, किस में नहीं होता है. राइट, ऐसा होता है. कभी कभी नई प्रोडक्ट आता है, उसमें बहुत ऑफर दिया जाता है, बाय वन गेट वन या मे बी 50% ऑफ. उसकी आफ्टर सम टाइम जब लोग उसको एडिक्ट होने लग जाते हैं या उसको पसंद आने लग जाता है, आफ्टर दैट यू नॉट बिलीव इट, वहां पे एक भी ऑफर नहीं आता, वो फुल प्राइस में आता है. जैसे ये सुनो, अब डीमार्ट जाइए, शॉपिंग करने जाइए, आप कहीं पे भी देखिए कोई सा भी प्रोडक्ट में जिसमें ऑफर चल रहा है, नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद वो इतना ऑफर देने के बाद उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा.
मतलब उस सेक्शन का ऐसा काम होगा कि वहां पे आपको रोज लेने ही पड़ जाता है हमेशा के लिए, और आप वो एक एडिक्ट हो जाते हो कि इस पैटर्न के लिए कि आपको वही प्रोडक्ट चाहिए. इट इज अ डीप स्टडी ऑफ द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स. जब भी डेटा होता है हमारा मेन काम क्या होता है, उसमें स्टडी करके मीनिंगफुल इनसाइट्स पता करना फ्रॉम दी रो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा में से. रॉ मतलब जो रॉ डेटा होता है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म में है, जो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, मैं उसको अप्लाई करूंगा डेटा मेथोलॉजी, अल्गोरिथम्स या कोई टेक्निक्स अप्लाई करके मैं उसमें इनसाइट फाइंड करूंगा. ओके, चलो आगे लिखेंगे प्लीज. नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर हियर? स्ट्रक्चर मीन्स द टैबुलर फॉर्मेट. ओके, नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर. अनस्ट्रक्चर मीन्स जो टेबल फॉर्मेट में नहीं, विच इज लाइक टेक्स्ट पार्ट, वीडियो, audio, and etc. Okay, now next point is, by using data science, companies are able to make the better decision, next the prediction analysis, next the pattern discovery, etc. सो बेसिकली क्या होता है, हमारा मेन टारगेट होता है टू बेटर डिसीजन, प्रेडिक्शन, एनालिसिस, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज पैटर्न डिस्कवरी. सो दिस इज ऑल अबाउट ही हमारा टारगेट होता है. जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, व्हाट इज अवर टारगेट, व्हाट वी हैव एनालिसिस. उसके बाद हमें कितना डेटा, मुझे कितना चाहिए, कैसा हमें डेटा निकालना है, किस टाइप का बिहेवियर होगा, और उसमें हम क्या डिसीजन बना सकते हैं. सो दैट इज एनालिसिस में भी हमारे पास बहुत सारे सब पॉइंट्स होते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हमेशा. अगर आपको कोई बेटर डिसीजन लेना है, या कोई भी आपको जब डेटा होगा तो बेटर डिसीजन लोगे, तो आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है. अब हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या होता है? आपके पास जब तक पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट डेटा नहीं होगा, यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन. अब पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पता करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब आप एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन के टाइम पे आपको पुराना स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछा जाता है. आप जाते हो एडमिशन के लिए ट्राई करते हो, तो आपको पूछता है कि आपको जेई में कितने मार्क्स है, या एमएससीटी में कितने मार्क्स हैं. तो उस मार्क्स के बेसिस में आपको इस साल एडमिशन में कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है. इज इट राइट? यस और नो? ऐसा होता है. अब ये चीजें कैसे पता चलेगा? वी हैड टू एनालाइज ज्यादा लास्ट ईयर रिकॉर्ड, मे बी उसके लास्ट ईयर, या आपको एक स्टैटिस्टिक्स आ जाता है कि यार इस पर्टिकुलर मार्क्स में ना, इस फिगर में आपको ये पॉसिबिलिटी आ जाती है. तो ये जो पॉसिबिलिटी आती है अप्रोक्सीमेटली आपको एक एनालिसिस के बेसिस पे, ताकि हम वहां पे एक्सपेक्टेड कर सकते कि इस टाइप का आ सके. बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन. कभी भी आपको डेटा साइंस आपको एक प्रिडिक्शन दे सकता है, बट नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेसी. एक आपको एनालिसिस करके देता है कि लास्ट प्रीवियस के बेसिस पे, या इस टाइम के बेसिस में, लास्ट ईयर ये हुआ था, इसके पहले ये हुआ था, तो देयर इज अ मोस्ट पॉसिबिलिटी कि इस बार भी ये होगा. यस और नो? अभी फॉर एग्जांपल हम लोग मुंबई वेदर की बात करते हैं, तो मुंबई में हर साल सबको पता है कि इस टाइम पे थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो जाती है. अभी कैसे पता चलता है? वी नो द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट इज दिसंबर जैन में थोड़ी सी ठंडी हवा आने लगती है, बट इस साल नहीं हुआ, तो दैट इज प्रिडिक्शन इज रॉन्ग. गॉट इट? सो दैट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट आंसर. हम पुराने डेटा से हम लोग एक कंपेयर करके दिखाते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कहाँ कहाँ पे डेटा साइंस का यूज हो सकता है? एरिया आई विल टेल यू. द एरिया इज सबसे ज्यादा काम आता है बैंकिंग में. बैंकिंग के अलावा कंसल्टेंसी के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा. बिकॉज हेल्थ केयर मतलब आपका पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है कि लास्ट टाइम आपको ने क्या ऑपरेशन किया. नॉर्मली यू पीपल आर फॉलोइंग द हार्ड कॉपी ऑफ द फाइल्स, लेकिन किसी के पास भी ये सिस्टम नहीं है हमारे सिस्टम में कि उसकी एक पर्सनल प्रोफाइल बन जाए. राइट, देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी. सोचो, अगर अगर किसी मेडिकल रीजन से आपको कुछ होता है, फॉर एग्जांपल फीवर आता है, तो लास्ट टाइम आपने डॉक्टर पूछा आपने लास्ट टाइम क्या हुआ था, मतलब फीवर आया था.
अभी फॉर एग्जांपल 10 डेज के बाद आपको कोई हेल्थ चेकअप करे, आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने को बोले, तो आपका रिकॉर्ड हमेशा प्रीवियस पे डिपेंड करता है कि अच्छा लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। तो आपकी पूरी फाइल बन जाती है। फाइल के अंदर पूरे परचेज होते हैं सारे, कि लास्ट टाइम आपने किसको कंसल्ट किया था, उसने डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या दवाई दी थी, किससे आप ठीक हो गए थे, इस बार आपको क्या हुआ है। तो ये पुराने रिकॉर्ड के बेसिस में होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉर्मल फीवर एंड ऑल, बट नॉर्मली जो केसेस स्टडी होते हैं जो हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं, बट अगेन is in a paper bound. This is not any specific system. Okay. The healthcare मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ अपने शॉप पे या किसी स्टोर पे बेच रहा हूँ या कोई मॉल में बिक रहा है, तो अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पता होगा कितना मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। सी, आपने देखा होगा हमेशा कार के अंदर, आपने सुना होगा कार में बहुत डिमांड होती है। जब भी आप कार खरीदने जाते हो कभी फैमिली मेंबर के साथ, तो आपने सुना होगा वहां पे हमेशा वेटिंग होता है, लाइन लगा होता है। वेटिंग मतलब बहुत सारे क्यूज होते हैं। अभी क्यूज का मतलब कैसे होता है कि वहां पे दे आर एक्सपेक्टेड कि आपका वेटिंग होगा, आपको ये कार आपको 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। अब ऐसा क्यों होता है? द रीजन वाई दे हैव, आपको लगेगा यार प्रोडक्शन तो करके रखना चाहिए, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग द प्रोडक्शन अर्लियर। जब तक उसकी डिमांड नहीं बनेगी तब तक वो प्रोडक्शन नहीं करते। जब आप बुक करते हो तो आपके नाम की गाड़ी बनना स्टार्ट होती है। नॉर्मली थोड़ा सा अर्ली बुकिंग पे उनका ऑर्डर्स होते हैं तो वो बना रहे होते हैं, फिर आपके नाम की ऑर्डर जाएगा जो आपको 2 महीने के बाद बन के आएगा। अब इससे क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आप कैसे डिसीजन लोगे? आपने पता चला 100 कारें बना के रख दी, पता चला कार में प्रॉब्लम्स आ गई, डिफेक्ट आ गया, नहीं बिकी, कार में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, कार में कुछ इश्यूज आने लगे, या हो सकता है उस मॉडल में मॉडिफिकेशन चाहिए, तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टोर नहीं कर सकते। आप रखते हो क्योंकि आपको स्टोर करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? अगेन द वेयर हाउसेस लगेंगे, कॉस्ट लगेगा। तो जैसे प्री बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोडक्शन उतना फटाफट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें डेटा के बेसिस पे करते हैं। राइट, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट। ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डेटा साइंस प्रोसेस। लिखेंगे प्लीज नेक्स्ट टॉपिक। In the data science process, there are a few part. One is the collection. Wait a second. This is collection. First, the part is data collection. Then another is cleaning. Data cleaning. Then exploration. Sorry, exploratory. Data analysis. Next, model building. Next, model deployment. Okay, so this is the arrow like this. ओके, सो चेन चेक कलेक्शन ऑफ द डेटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग का जो पार्ट आता है, राइट। अब डेटा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मॉडल डिजाइनिंग। आई विल टेल यू द सम पार्ट जो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या क्या काम करता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है स्पेसिफिक फॉर दिस वन, ये होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो एमएल में काम करता है। ये बेसिकली इस पे काम, जो एमएल पे काम करता है, राइट। ये पूरा जो पार्ट कहलाता है दैट इज ऑल अबाउट दी डेटा साइंस। कंप्लीट जो डेटा साइंस में पार्ट में आ जाता है, उसके साथ डेटा कलेक्शन से लेके सब आता है। डेटा क्लीनिंग कलेक्शन के बाद डेटा क्लीनिंग से लेके डेटा एनालिसिस तक, राइट, दिस पार्ट बेसिकली फॉर जो काम करता है डेटा एनालिटिक्स। आपने सुना होगा डेटा एनालिटिक्स के बहुत सारे पोस्ट निकलते, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स का काम होता है, राइट। इसके अलावा जो डेटा कलेक्ट करना है, जो डिजाइन करना है और कलेक्ट करना है, क्वेश्चन में मिसिंग है। एक डिजाइन के अलावा डेटा का डिजाइन करना भी आता है या क्लीन करना भी बोल सकते हैं उसमें, वो डेटा इंजीनियर होता है, राइट। डेटा इंजीनियर आपको पूरा एक
सिनारियो भी बनाता है कि कैसे कैसे डेटा कलेक्ट होगा, कैसे सिनारियो बनेगा, तो इसका बड़ा रोल होता है। तो अगर मैं आपको हायरार्की लेवल की बात करूं, जो सबसे ज्यादा जो जॉब्स अगर मैं कहूँ सैलरी पॉइंट ऑफ से देखा जाए, तो हु गेट द मोर सैलरी, दैट इज द फर्स्ट इज द डेटा इंजीनियर। कंपनी के अंदर जो डेटा इंजीनियर होता है वो बताता है कि कैसे कैसे डेटा निकलेगा, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन बाइक रखता है अपने पास। दूसरा आता है डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस या मशीन लैंग्वेज मशीन लर्निंग इंजीनियर, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट, बट थोड़ा सा अलग चीज होती है। मशीन लर्निंग विल बी मोर कंपेयर टू डेटा साइंस, ठीक है। तो मैं इसको थर्ड लेवल पे आता हूँ, कभी कभी सिमिलर भी जा सकते हैं। एंड द फोर्थ लेवल विल बी द डेटा एनालिटिक्स। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पोजीशन है वो उन सब की कैसे पोजीशन होती है, ठीक है। So this is the highest position is a data engineer in the company, and ML and data science, mostly we can call as a ML data science will be club. Okay, and lastly data analytics. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आपको एक प्रोसेस समझ में आ गई कि कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, क्लीनिंग होता है, डेटा को एनालिसिस किया जाता है, मॉडल बिल्डिंग होता है, और लास्टली मॉडल को डिप्लॉय करते हैं कहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो सम पॉइंट अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले जब भी आप डेटा साइंस परफॉर्म करना चाहते हो, तो वी हैव टू गो फॉर द प्रॉब्लम। आपका मेन प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज यू डू, व्हाट इज योर एक्चुअली प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड, द फ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट? जब भी, अच्छा नोट कर रही वाला डायग्राम, प्लीज नोट डाउन। डन। कैन यू प्रोसीड? नोट कर रहे हो? प्लीज एक्नॉलेज। Yes, sir. डन। Done, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा डिप्लॉय, अरे बाबा, सबसे पहले वी हैड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एक्चुअली? टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेटा साइंस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट आई एक्चुअली प्लानिंग टू डू। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, अगर जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम इज बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल सकते हो या रिक्वायरमेंट बोल सकते हो कि आप एक्चुअली किस पे काम करना चाहते हो। वर्किंग इन द हेल्थ केयर, यूर वर्किंग द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यूर वर्किंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप किस प्रॉब्लम को डेटा साइंस से आप ओवरकम करना चाहते हो या हेल्प करना चाहते हो, प्रिडिक्ट करना चाहते हो, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग and framing the problem
is the first step of data science life cycle. The framing will help to build an effective model that will have a position, that will have a positive impact on organization. Okay, next point, collection of data, or we can call as a data collection. The aim is to collect the right set of data that is high quality, targeted data, and the mechanism to collect them. It is a crucial to obtain meaningful result. Let's stop. Every day, around 2.5 quintillion byte of data is created. हर जगह से इतना डेटा क्रिएट होता है, which is the unstructured format. अब इसको पहले स्ट्रक्चर बनाओगे या स्ट्रक्चर को मैनेज करोगे, so many things are there. So we need to extract the data and export it into usable format. Such as किसमें करोगे, या तो CSV फाइल में करोगे और या तो JSON फॉर्मेट में आप करोगे. ठीक है, चलो नोट डाउन करेंगे प्लीज.
Done, everyone? चलो आगे बढ़े. Next, please acknowledge if you completed. Done. Please acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Next. Thank you. So now next one, that is हमने प्रॉब्लम पता किया, हमने डेटा कलेक्शन भी कर लिया. चलो अभी कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? चलो क्लीन करते हैं डेटा. अब डेटा क्लीन का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. डेटा क्लीन का मतलब होता है जब मैं डेटा डाउनलोड करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो हो सकता है किसी के पास कुछ वैल्यू ना हो या किसी के पास कुछ डेटा ही ना हो. एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैं सेल्स का डेटा निकाल रहा हूँ, पता चला किसी ने इंसान ने तो सेल, किसी ने कुछ परचेस किया ही नहीं अमेजोन से, राइट? हो सकता है ना ऐसा, जिसने अकाउंट बनाया लेकिन आज तक यूज नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, आई हार्डली यूज, मैं साल में एक दो बार कभी फ्लिपकार्ट से लेता हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर प्रोडक्ट अमेजोन से लेता हूँ. तो हो सकता है किसी साल तो मैंने लिया भी नहीं होगा, हो सकता है. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम कभी इंस्टॉल करके रख देते हैं लेकिन कभी यूज नहीं करते या बाय नहीं करते. जस्ट रीजन बाय बिकॉज वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म, राइट? नॉर्मली आई प्रेफर ओला कंपेयर टू उबर. तो उबर से मेरा अकाउंट में कभी यूज नहीं होता, तो मेरे लिए क्या है, वो जब डाउनलोड करेगा, सब रिजल्ट या सेल्स निकालेगा, तो मेरा क्या आएगा? जीरो. गॉट इट? सो बेसिकली बहुत सारी मिसिंग वैल्यू, बहुत सारा डेटा जो होता है अनफिल्टर होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, कुछ रिजल्ट उसके अंदर नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है. अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत सारा करप्टेड डेटा, नल वैल्यूज हमारे पास, डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी जिससे हमारा रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा. तो इसको हमेशा रिमूव करना पड़ता है, राइट? आई थिंक ये सभी को पता है. ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद पॉइंट प्लीज. द थर्ड वन, क्लीनिंग डेटा. The most of the data, लिखेंगे प्लीज, most of the data collect during the collection, during the collection phase will be unstructured, irrelevant, and unfiltered. Next point, bad data produce bad result. Okay, so the accurate or accuracy, so accuracy and the efficient of analysis will depend heavily on the quality of data. The quality of data, अगर डेटा आपका अच्छा रहेगा, आपको रिजल्ट एक्यूरेट अच्छा आएगा. इट एलिमिनेट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट
null value, corrupt data, inconsistent data, data types, invalid entry, missing data, and the improper formats और improper formatting. Okay, so ये सब चीजें करता है basically data clean करने की टेक्निक को. Okay, please note it down, please. Done? Yes, sir. Thank you. So next आगे बढ़ते हैं. अगला हमारे पास आता है, that is EDA, exploratory data analysis. Okay, write down the fourth point. Now the fourth point is, we can call as a EDA, exploratory data analysis. Okay, इसमें लिखना start करेंगे please. In this phase, a large amount of organized high quality data, in which it's begin conducting an exploratory data analysis, full stop. Effective EDA uncover valuable insights that will be useful in the next phases
ऑफ डेटा लाइफ साइकिल। ओके, अभी क्या बोलना चाह रहा है, जब वहां पर लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा तो हाई क्वालिटी डेटा चाहिए, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इतने बड़े डेटा को अलग अलग इनसाइट्स में, ताकि मैं उसको नेक्स्ट फेज में, यानी कि हमारा जो लाइफ साइकिल फेज में, हम उसको लेके जा सके। ओके, प्लीज नोट डाउन। All right, done. Can we go ahead? The next part. The fifth one says the model building and deployment. And this model building and deployment, we can use machine learning, algorithm, statistic model, and the algorithm to extract high value insight and prediction. It should be optimized deployment. All right, note down please. So this is the model building as well as deployment. So we studied all the parts. Okay, after the next topic is the motivation to use data science. What is the motivation behind the use of motivation of this subject or data science technique? तो वो क्या लगेगा, we'll discuss here. Okay, so the first motivation, the biggest motivation is the volume. हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा आता है, biggest volume. मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा कैप्चर होता है, तो इतना हाई वॉल्यूम में डेटा आता है हमारे पास, तो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट कि हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। हर साल, हर हर रोज, हर सेकंड हमारा डेटा जा रहा है। सोशल मीडिया का डेटा हो रहा है, कभी ई कॉमर्स का डेटा हो रहा है, हर लोग डेटा 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 ही काम कर रहे हैं, सब जगह डेटा हो रहा है। इट्स रैपिडली इंक्रीजेस। तो हमेशा जब रैपिडली इंक्रीज होता है तो देयर इज सम मॉडल, या हमें एक डिप्लॉय करने की फ्रेमवर्क की बहुत जरूरत है ताकि हम डेटा को मैनेज कर सके। अनदर इज द डायमेंशन। जो हमारा डेटा है वो एक अलग ही डायमेंशन में जा रहा है। इट इज नॉट लाइक कि हम एक कैटेगरी में जा रहे हैं, हम मल्टीपल टाइप में कैटेगरी में देख रहे हैं। न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, कैटेगरी में डेटा हो सकता है, डेटा के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, डेटा के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं।
तो हर जगह से एवरी रिकॉर्ड, हर जगह से हमारे पास अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग टाइप में डेटा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन आता है द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हर एक जगह पे डेटा को जब करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। सो दीज आर द मोटिवेशन जहां हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। चलो एक एक करके एलोबरेट करेंगे। तो सबसे पहला निकल के आता है वॉल्यूम, देखेंगे प्लीज। फर्स्ट से इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है जब वहां पर ढेर सारा डेटा है, दैट इज अ मोटिवेशन ऑफ बिहाइंड द डेटा साइंस। अदरवाइज हम डेटा साइंस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास डेटा कम होता तो दैट इज ओके, वी कैन मैनेज इट। बट डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लीज, दी sheer volume of data captured by organization is exponentially increasing the need of uses large volume data to extract information increases. Next point, a rapid increase in the volume of data exposes the limitation of current analysis methodology, full stop, in few few implementation, the time to create generalization model is critical, and data volume, sorry, is critical, and data volume play a major part in determining the time frame to develop and deployment. All right. So note down करेंगे please. That is about the volume.
Done. चलो आगे बढ़े. All good. हाँ सर. Okay. Dimension the variety of data related relates to the multiple type of volume or values like numerical, categorical, comma, format of data like audio, video, and other files, and the application of data like location, coordinates, location coordinates, graph data, and etc. Every single record or data point contain multiple attribute or variable to provide context for the record. Example: every user record of an e-commerce site that can contain attribute. As we discuss, हर एक जगह हमारा डेटा होता है. Attribute such as product review, product review, purchased, users demo, frequency of purchase, एक्सेट्रा. ये सारा चीजें रिकॉर्ड अवेलेबल होता है. दिस इज वन ऑफ द डायमेंशन जो हमारे पास अवेलेबल होता है. लास्टली द थर्ड वन, द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. द कॉम्प्लेक्सिटी of information that needs to get extract from the data in increasing as well. ठीक है. जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे पास जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी. ओके, चलो नोट डाउन करेंगे प्लीज. आई विल वेट फॉर 2 मिनट.
Done. So now one more thing I will add it here. What is the data science task? Data science का task क्या क्या होता है, क्या क्या data science do, क्या क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा जनरिक बताता हूँ आपको. डेटा साइंस के अंदर आप कर सकते हो द वन थिंग दैट इज डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, राइट? दैट इज वन थिंग इज एनालिसिस. दूसरा, टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हो. व्हाट अदर डू? रिग्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट, क्लस्टरिंग. सुना कभी नाम ये सब चीजें? नो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम सब डिटेल में देखेंगे. क्लस्टरिंग. नेक्स्ट इज एनामोली डिटेक्शन. नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन. एज पर द प्रीवियस डेटा से हम उसको रिकमेंड कर सकते. ठीक है. डीप लर्निंग. डीप लर्निंग. नेक्स्ट, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. आई थिंक ये टॉपिक ही हमारे पास है पूरा का पूरा. लास्टली एक छूट रहा है हमारे पास, वन मोर थिंग, दिस क्लासिफिकेशंस. एंड लास्टली द फीचर सिलेक्शन. ओके, चलो, नोट डाउन प्लीज. Done. Okay. So next topic is that is the important issue regarding data in traditional file system. अभी क्या होता है, हमारे पास जो डेटा है, अब इसमें इश्यूज आने लगते हैं. अब इश्यूज क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है. तो व्हाट आर द इशू एक्चुअली, हम क्यों जा रहे हैं इसमें? सो लेट्स राइट डाउन द मेन टॉपिक इज द important issues regarding data in traditional file system. In traditional file system. Okay, चलो देखते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम इज वॉल्यूम. ठीक है. द सेकंड वन इज वेलोसिटी. किस स्पीड से बढ़ रहा है. थर्ड वन इज वैरायटी. फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्सिटी. एंड द फिफ्थ वन इज वेरिएबिलिटी. ठीक है. चलो इसको देखते हैं कि करके पॉइंट बना के. ना नाउ डेज अभी क्या होता है, डेटा का वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, हर फील्ड में बढ़ रहा है. तो एक प्रॉब्लम निकल के आती है, डेटा को कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, उसको कलेक्ट करने के बाद हमें उसे स्टोर करना, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. तो देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, देखेंगे. कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम different sources like transaction, social media, and the business related data.
Next, the velocity. The resources like RAM, like memory, storage, processor are limited. ये सब क्या है? Limited है सब. अब लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है कि आप ज्यादा उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे. दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके. नेक्स्ट इज वैरायटी. द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रॉम different sources is different. Next, complexity. It is difficult to link, match, and transform such data across system. It is necessary to correlate it. Okay. Next, variability. It comes under. It comes in a different sources like social media, which difficult to manage because of unstructured or the semi-structured data. Okay, चलो note down करेंगे please. सर वो कॉम्प्लेक्सिटी वाले लाइन में वो जो सेकंड पॉइंट है वो नहीं समझा. आई मीन इट इज नेसेसरी Necessary टू. to correlate. फॉर ओके. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई डेटा आता है, अब डेटा को मुझे समझ में नहीं है किसकी बात हो रहा है, तो कोरिलेट का मतलब होता है मुझे किसी न किसी से रिलेट करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आपको मैंने एक एक्सेल दे दिया, आपको नहीं पता वो डेटा क्या है. आप बोलो कि सर क्या है ये डेटा, सीएसवी फाइल दिख रहा है, बट इट इज अ ट्रांजेक्शन डेटा. अब ट्रांजेक्शन मतलब किसका ट्रांजेक्शन? फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन या बैंकिंग की फाइल का ट्रांजेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का डेटा है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा. यू हैव टू कोरिलेट इट. इट इज नेसेसरी टू लिंक विद द समथिंग. आपको मैच करना पड़ेगा किसी और के साथ और रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा डेटा किस चीज का है. गॉट इट ना? बिकॉज सी, वी हैव एन नंबर ऑफ डेटा आ रहा है, आपने डाउनलोड किया सीएसवी फाइल में, आपको सब एट्रीब्यूट दे देगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि डेटा किससे लिंक है या किससे रिलेटेड है. अंडरस्टूड? यस सर. चलो नोट डाउन करेंगे प्लीज. और सर वो वर्ड कौन सा है? डिफिकल्ट टू मैनेज वेराइबिलिटी. डिफिकल्ट टू मैनेज because of unstructured, semi-structured, unstructured और semi-structured data. ओके सर. बिकॉज ऑफ अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर. देखो, अनस्ट्रक्चर मतलब जो टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है, मल्टीमीडिया आ रहा है, उसको थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. सेमी स्ट्रक्चर मतलब वीडियो के साथ हमारा नीचे कैप्शन भी है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ टैबुलर फॉर्म में. तो टैबुलर फॉर्म में डेटा तो कभी दिक्कत ही नहीं करता है. डन.
Yes, sir. Done. So, next topic is that is about the preparation of data. जब भी मैं डेटा प्रिपेयर करने की बात करता हूँ तो देयर इज सो मेनी थिंग्स इन अवर माइंड कि सर ये जो डेटा जब हम प्रिपेयर करते हैं ना बहुत से नॉइजी डेटा आ जाता है. आई विल टेल यू. सो जब भी हम डेटा प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज एग्जाम्पल है ना. एग्जाम्पल क्या आता है? इनकम्प्लीट डेटा. इनकम्प्लीट डेटा. दूसरा एक प्रॉब्लम निकल के आता है इसको नॉइजी डेटा. तीसरा निकल के आता है इनकंसिस्टेंसी. कुछ डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है. ठीक है. सो इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है किसी का. ठीक है. आई विल राइट हियर 4/05 एंड 1995. ठीक है. एंड उसका एज लिखा हुआ है सपोज करो 56 ईयर. बताओ क्या दिख रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है? इज समथिंग रॉन्ग? कोई Yes, sir. व्हाट इज रॉन्ग हियर? बिकॉज आपका जो डेटा है इनकंसिस्टेंसी है. मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे डेटा चाहिए तो डेटा कोई इंसान ने फिल किया. सपोज करो उसने फिल किया दैट इज डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. जैसे सम कॉलम्स आते हैं फिल्ड होता है ना सबको. हमने भरा हुआ फॉर्म. तो जो फॉर्म भरते हैं तो बहुत से फील्ड्स होते हैं. उस फील्ड के बाद उसके कुछ हमारे पास एक्सेल रिकॉर्ड बनता है. तो जब भी हमने देखा सपोज को हमने डेट ऑफ बर्थ देखा किसी का डेट ऑफ बर्थ एंटर किया तो पता चला किसी ने डेट ऑफ बर्थ डाला और किसी ने एज 56 डाला विच इज इनकंसिस्टेंसी. अब हाउ वी कैन सिलेक्ट? क्या हम इसको मैं 56 एज कंसिडर करूं या डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करूं? सो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. सर अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो एज रॉन्ग आता है मतलब. एग्जैक्टली. लेकिन उसने 56 डाला तो माइट भी उससे गलती हुई हो. इट वुड बी पॉसिबल. यू कैन सब्ट्रैक्ट टू 2023. अगर 23 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ अगर सपोज करूँ मैं 56 माइनस करता हूँ तो वो फिगर डालना चाह रहा होगा. इट कुड बी समथिंग 19 का वो फिगर डालना चाह रहा होगा जो ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है. दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी किसने ये फिगर गलत डाला. यस. सो एज अ डेटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ मैं किसको कंसिडर करूंगा? आई कैन नॉट कंसिडर एनीथिंग. इट्स अ इनकंसिस्टेंसी डेटा. तो आई विल ड्रॉप इट. मैं क्या करूंगा यहाँ के इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा. बिकॉज आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन टू फॉल्टी डेटा. मिसिंग वैल्यूज में डिसीजन नहीं ले सकते. इफ यू अप्लाई एनी वन ऑफ देम बट इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी हैव एन नंबर ऑफ डेटा व्हेन वी हैव लैक्स ऑफ फील्ड. तो तुम लैक्स ऑफ फील्ड कैसे निकालोगे? सो दिस हैज टू रिमूव्ड इन डेटा क्लीनिंग प्रोसेस. जब डेटा को प्रिपेयर करते हो तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ता है. डेटा को क्लीन करना पड़ता है. डेटा को सब हटाना पड़ता है जो मिसिंग वैल्यूज हैं. इसको आप इनकंसिस्टेंसी बोल सकते हो मिसिंग वैल्यूज बोल सकते थे. सो मेनी नम्स आते हैं. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का फर्स्ट नेम है. सपोज करो किसी का फर्स्ट नेम है और किसी का लास्ट नेम है. अभी बहुत बार ऐसे दिक्कत होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लिख दे लास्ट नेम फर्स्ट नेम में होता है. तो ये भी क्या होता है हमारे पास कुछ मिसमैच या इनकंसिस्टेंसी डेटा बोल सकते हैं उसमें. अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. ओके. तो ये सारी चीजें मुझे दैट इज अ एग्जांपल जो हमें रिमूव करना पड़ता है डेटा प्रिपेयर करने के टाइम पे. ओके. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे. द हेडिंग इज रिलेटेड टू दिस डेटा प्रिपरेशन. ओके. डेटा प्रिपरेशन. So when we prepare the data, we have multiple steps are there. Okay, so let's write on these steps. The first step is like just a second.
All right. So let's write here, make a diagram. So first is data discretization. Discretization. Next is data cleaning. Integration. Data transformation. And the data reduction. All right. Chalo. The first says that data discretization. Heading डालेंगे. These are the steps for data preparation करने के लिए. पहला आता है data discretization. In which it is a method. It is a method to convert attribute value of continuous data into finite set of interval with minimum data loss. Second one, data cleaning. In the data cleaning, if the data is inaccurate or incomplete, inaccurate or incomplete, then the business decision may wrong. Make sure data is error-free, missing value, and etc. Third one is data integration. The excess data from any source, no matter the origin, format, or narrative, it should be integrated, or it should be integrating them together. Fourth one, data transformation. Being able to quickly change the way data is summarized and presented, enable business analyst and executive
to view of data. To view of data. Fifth point, data reduction. It obtain, reduce representation in volume, but produce the same or a similar analytical result. All right, नोट करेंगे प्लीज, कहां से लिखना बाकी किसी का? Let me tell. Please let me know when I have to scroll. Go down, please.
Done. All right, done. Please acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so last topic of today's session is that is what is uh, modeling. Okay, what is the purpose of the model? So what is data model? So एक छोटा सा heading लिखेंगे आज का last topic, that is data modeling. Okay, note down please. In the data model, basically is creating simplified diagram of something like which contain the symbol, which contain the data flow, which contain the blueprint of the design, which is actually the organization of need actually. डेटा मॉडल मतलब कैसे हमारा मॉडलिंग काम करेगा, एक फ्लो चार्ट बोल सकते हो या उसको मैं बोल सकता हूँ एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, राइट? नोट डाउन करेंगे प्लीज. सो डेटा मॉडल इज अ प्रोसेस. Data model is a process of creating simplified diagram of a system and the data element contain it uses text symbol to represent the data and the flow of data. Next, it provides a blueprint. It provides the blueprint for classification, blueprint
for designing a new database. It helps an organization to use its data effectively to meet business needs for information. For information. And lastly, it also shows data entities, data entities and relationship and relationship and relationship between entities. All right. So that is all about the data modeling. Note down, please. Please note down. So this is all about the data modeling. अच्छा, यहाँ पे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कितने टाइप के डेटा मॉडलिंग होते हैं. पहला होता है कंसेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल. सो दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो कंप्लीट दिस टॉपिक हियर. अच्छा, आज के टॉपिक में किसी को डाउट यू कैन डिस्कस हियर. नो सर, थैंक यू सर. थैंक यू. सो हमने क्या क्या देखा, जस्ट रिकैप इट. So we have started the first introduction of the subject. What is data science? Data science में क्या क्या एरिया होते हैं, कैसा प्रोसेस करता है, and what are what are the process, framing of problem, collection of data, cleaning data, EDA क्या होता है, model building and deployment. And after that, what is the motivation or use of data science techniques? We have discussed volume, dimension, complex questions. Then data science के क्या क्या टास्क हो सकते हैं, हमने वो भी दिखा यहाँ पे. आफ्टर दैट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इशू जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं. आफ्टर दैट, डेटा प्रिपरेशन, जो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कैसे डेटा को प्रिपेयर करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस. एंड लास्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग बेसिकली हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं जो हम लोग कंपनी पे यूज करते हैं. ओके. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, द बुक इज one of the book asking the student is data science concept and practice. You can prefer by Vijay Kothu. Okay, that is Elsewhere का एक बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं. आई थिंक ये ई बुक आपको मिल जाएगा. यू कैन ट्राई. चलो, so that's all for today. So we'll meet you next class. Thank you so much. Take care. Bye bye.